स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर की नाम जान लेते हैं। सुनील लमानी स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर अंपायर अंपायर वेट, गाड़ी बंद, होल्ड फॉर अ मिनट, गाड़ी थोड़ा देर। भाई वो स्कूटी किसकी है? एक्सेस साइज। अनिल लमाने की पहली गेंद पे तगड़ा जवाब देते हुए, गर्मा गर्म मैसेज भेजते हुए प्रतिस्पर्धी टीम के लिए। उस मैसेज में साफ ये लिखा है कि चैलेंज इज एक्सेप्टेड, हमें चुनौती स्वीकार है। ये मैसेज भेजते हुए सुनील लमानी प्रतिस्पर्धी टीम को सोचने में मजबूर करते हुए पहली गेंद में तगड़ा जवाब दिया है गेंदबाज को। एक मर्तबा सोचेंगे जरूर, नई गेंद तो फेंकना होगा अब अंदर अंपायर के पास। तो अंपायर के पास नई गेंद जाएगी क्योंकि गेंद लगभग स्टेडियम से बाहर गई है। न्यू बॉल आया बॉल आया सर, वापस लौटी है। चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं, सैनिटाइज होकर गेंद वापस आ रही है। 14 दिन तक आइसोलेशन में थी क्योंकि कोविड पॉजिटिव था। जब डॉक्टर से रिपोर्ट मिला हमें कोविड नेगेटिव है करके, तब गेंद को वापस आना पड़ा है। तो ये देखिए गेंद वापस आ रही है, वो भी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट से। तो ये रिपोर्ट कुछ इस प्रकार का है कि जब कोविड 19 था ना, तब ये चीज आपको सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था हर जगह। और बिल्कुल टॉप पे गेंद डाला था, हाफ वाली पर लेकर खेलने का प्रयास, अंडरआइज खेला था। इससे एक मिलान इलाका में साफ और सुथरी फील्डिंग हमें देखने को मिली है। व्हाट अ शॉट, बहुत जोर से मारा है। इस बार तो सिंगापुर में भेज दिया है गेंद को, हवाई यात्रा में भेजा है गेंद को। ये यात्रा शुरू हुई थी सांकोले से, जाकर खत्म हुई है सिंगापुर में। भाई एक हफ्ता तो लग जाएगा गेंद को वापस लौटने में, फ्लाइट बुक करवाना पड़ेगा यहाँ महेश नादार सर को। तो देखिए महेश नादार सर फ्लाइट बुक करवा के गेंद को वापस मंगवा लिया है। तो अब मजा आ रहा है इस एक मैच में, क्योंकि अभी तक 2 छक्के लगे हैं, अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है। तो टोटल 12 रन स्कोर बोर्ड पर आप देख सकते हैं। काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है सुनील लमाने की बल्लेबाजी के द्वारा। क्या बेहतरीन प्रयास रख रहे हैं, एक और बार बहुत जोर से बल्ला घुमाते हुए एक और गगनचुंबी छक्का। आप देखे जरा किसमें कितना है दम, ये पूरा दम खम झोंकते हुए अपने हर एक शॉट के पीछे सुनील लमानी। और इसलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं, दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। ताकतवर खिलाड़ी है और इनके भुजाओं में सहस्त्र हाथियों का बल है भाई। और ये देखिए नजाकत था, रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। काफी अच्छी गेंद देखने को मिली। इस बार थोड़ा आगे फेंका था गेंद को, तो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत का कारण भी बन रही है बल्लेबाज सुनील लमानी के लिए। कोई रन नहीं बनता हुआ। इट्स लमानी अप अगेंस्ट लमानी। और इस लमानी की रेस में एक और लमानी को ही जीतना पड़ा है, वो है सुनील लमानी। अनिल लमानी की बुरी तरीके से पिटाई की है शुरुआती ओवर में। 6 गेंदों में 19 रन बने हैं, एक ओवर समाप्ति के बाद 19 रन बिना विकेट खोए। नहीं 6.66 लगातार, और बाद बीच में एक डाट है, 5वीं गेंद भी डाट थी और अंतिम गेंद में सिंगल आया है। टोटल 19 रन। सरफराज नवाज सर, तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। अरे सरफराज सर, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, रूप तेरा वंडरफुल है, आज प्रोग्राम तेरा हाउसफुल होगा क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। बस बस बस। और की पहली गेंद थी, पहली गेंद पे फुट पर जाकर
दिया, बचा रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है। और सबसे खास बात ये थी कि संतुलन कितना बढ़िया था, देखिए वाह, खामोश रहे गेंद आने तक, और लास्ट मिनट में ये तय किया कि गेंद को कहाँ खेलना है कहाँ नहीं है करके। वाह, व्हाट क्रिकेटिंग शॉट। आया 4, ये 4 के साथ टोटल स्कोर बनी है 23। बल्लेबाज सुनील लमानी की है ये सारे के सारे रन्स। एक और मोटा शॉट, एक और आधा डजन रन, आया 6। फिलहाल गेंदबाज को ये समझ में नहीं आ रही चीज की ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ, हाँ, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए बल्लेबाज सुनील लमानी। क्या बेहतरीन प्लेयर है भाई। और इस बीच थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाकर गेंद डाली थी, ब्लैक होल, मिल गई विकेट। सुनील लमानी की विकेट मिलती हुई दिलीप लमानी को। तो भाई मैंने कहा था एक लमानी को अगर आप समेटना चाहोगे तो दूसरे लमानी को ही आना है, और यहाँ पर देखो एक लमानी को भेजने के लिए दूसरे लमानी को ही आना पड़ा था। दिलीप लमानी आए थे विकेट लेने के लिए। तो ये एक बड़ी विकेट हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे अभी तक सुनील लमानी। तो काफी परेशान करके रखा था, थोड़ा सा सर दर्द का कारण बने थे गेंदबाजी टीम के लिए। अब थोड़ा सा सुकून का सांस जरूर मिलेगा प्रतिस्पर्धी गेंदबाजी टीम को। तो अब गेंदबाज बल्लेबाज इशाक इशाक आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 3 पर भेजा है खान ने इस खिलाड़ी को। तो देखना होगा अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे आगे चलकर। हम ये चीज को भी देखेंगे कि दिलीप कैसे गेंदबाजी करते हैं करके। तो देखिए दिलीप की अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद डाली थी दिलीप ने। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये सिंगल तो बड़े आराम से बन सकता है इस एक सरफेस पे, क्योंकि एक छोटा सा मैदान तो है नहीं, विशाल सा मैदान है। अगर आपकी दिमाग की बत्ती जलाओगे तब आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो हर बार तो छक्का चौका तो नहीं लग सकता, सिंगल डबल से भी आपको काम चलाना होगा, उससे रनों की कारवा बनेगी। और सिंगल डबल से आप रन गति को आगे ले भी जा सकते हैं। शायद ये बात को बेहतर तरीके से जानते हैं बल्लेबाज, इसीलिए अब अपने ऊपर भरोसा रखते हुए सुनील लमानी पिछले मैच में सस्ते में वापस लौटे थे, इस मैच में पूरा 100% देने की प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए सीधा कैच थमाया, हो व्हाट अ कैच, उससे एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। टूर्नामेंट की टॉप कैचेस में ये कैच को भी शामिल किया जाएगा। जबरदस्त कैच करके कह रहे हैं हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हरीश सर। बिल्कुल सर, जबरदस्त कैच है, जजमेंट देखिए कितना बढ़िया था। और सबसे खास बात ये थी कि बैलेंस आपके मेंटेन, जो बैलेंस है ना उसे मेंटेन करना पड़ता है इस तरीके की कैच को पकड़ने में, आपको जजमेंट की भी जरूरत होती है पड़ती है। तो 2 ओवर के दरमियान 30 रन बने हैं, 30 रन पर 2 विकेट खो रही है टीम। और शॉर्ट पिच गेंद थी, खूबसूरत तरीके से उस गेंद को पुल किया है मिड विकेट इलाके में। मिड विकेट के फील्डर काफी चौक कर रहे थे, काफी अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है उस एक मिड विकेट बाउंड्री पर। 3 रन बचाने में कामयाब हुए हैं मिड विकेट के फील्डर, काफी अच्छा खासा प्रयास अंजाम देते हुए अपनी फील्डिंग प्रदर्शन से। तो ये देखिए हमारे आदरणीय गोविंद सोमू लमानी और मोहन लमानी का भी आगमन हो रहा है, हम स्वागत करते हैं आपको। और इंतजार किया था गेंद आने तक, अंतिम समय पे उस गेंद को
प्यार से सहलाया था पॉइंट के इलाके में। और एक और सिंगल जरूर मिल रहा है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि गेंद लगभग मिड विकेट बाउंड्री तक पहुंच चुकी थी। अब इसीलिए सिंगल लेने में उतना ज्यादा मशक्कत, उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है दोनों बल्लेबाज को। और बहुत अच्छी गेंद डाल रहे हैं आज मुश्ताक, एक और बार अपने आप को सही साबित करते हुए। और क्यों कहा जाते हैं ये खिलाड़ी को अच्छे गेंदबाज, ये साबित कर दिया आज के दिन इन्होंने। क्योंकि पहले मैच में भी हमने देखा था अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस मैच में भी वही मोमेंटम को बरकरार रख रहे हैं। तो आत्मविश्वास कहीं कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ गेंदबाज में। तो ये देखिए, ये ओवर में मात्र 3 रन, अभी तक 5 गेंदे डाल चुके हैं गेंदबाज। ये अंतिम गेंद है ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद थी, उस गेंद को उठाकर मारने के प्रयास में थे, पर लीडिंग एज हवा में थी और यहाँ चांस था। भाई ये क्या हो रहा है, कैच से छूटते जा रहे हैं, ऊपर से परेशानी जो है वो गेंदबाज को पहुंच रही है। जानी ने क्या छोड़ा है। तो कल के दिन मैंने कहा था, अगर मेरे चाची, नानी, मौसी, दादी होती फिर भी ये कैच पकड़ लेती। हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी, मुंह फाड़ लेते तो गेंद अंदर घुस जाती। क्या छोटा है, इतना आसान सा अपॉर्चुनिटी को आप जाया होने दे रहे हैं भाई। तो ये ठीक नहीं है। आपको इस तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वालिफायर मैच में खेलना है तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आना है भाई। मेहनत में थोड़ी सी कमी नजर आई है। तो वो कहते हैं ना भाई, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और 3 ओवर के पश्चात 34 रन पर 2 विकेट खो रही है टीम नजीर सुपर वॉरियर्स। स्लॉट में गेंद मिली है, उड़ाया है गेंद को सीधे मिड विकेट फील्डर के हाथ में, थमा बैठा है कैच। एक और सॉफ्ट डिसमिसल, तीसरा विकेट का पतन हो रहा है नजीर सुपर वॉरियर्स टीम का। और बिल्कुल खाने में क्या चलेगा, वेज बिरयानी चलेगा, क्योंकि आज शिवरात्रि है गुरुजी, वेज मंगवा लो। और कल के दिन चाय पीने का मौका मिला था जमीर मोकाशी सर के साथ, साथ केफे में, क्या स्वादिष्ट चाय पिया था भाई, व्हाट चाय। जमीर मोकाशी सर काफी खुश। लीजिए, इसी बीच एक बड़ी विकेट देखने को मिल रही है यहाँ एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला के लिए। बहुत बड़ी विकेट है, क्योंकि अच्छा खासा बल्लेबाज है। अब उनको जाना पड़ा है वापस, पेविलियन रास्ता पकड़कर अब वो चले गए हैं। वैसे देखा जाए तो वो डगआउट में आपको नजर आएंगे नए खिलाड़ी विनोद, पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े होते हुए। काफी अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। और गेंद जो थी ना, ये कहीं ना कहीं नीचे थी, तकरीबन सुर्रा बनकर गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में गई है बिना कोई रन के। डॉट गेंद प्रेशर जरूर बना के रखेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ गेंदों में ज्यादा रन नहीं देखने को मिला है। पिछले 8 गेंदों में 4 मात्र रन देखने को मिले है। और ये देखिए, ये को डॉट, ये ओवर में अभी तक किसी प्रकार का रन नहीं बना है, चाहे वो वाइड क्यों ना हो या फिर बल्ले से क्यों ना हो, एक्स्ट्राज के तहत क्यों, एक्स्ट्राज के रूप में क्यों ना हो, या फिर बल्ले पे से क्यों ना हो, अभी तक रन नहीं बने हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और ये लो जीवसी बुलटास, तैयार थे बल्लेबाज, जैसे ही देखा उन्होंने छोटी गेंद है करके, और उस गेंद पर टूट पड़े हैं, बुरी तरीके से पीटा है यहाँ गेंदबाज को। क्या छे, क्या छे है भाई, वाह। विनोद अब बहुत देर के बाद अपना रंग बिखेरते हुए, तो विनोद को बल्ले से पहला छक्का निकलता, वाह, मिड विकेट इलाके में। तो ये खिलाड़ी की स्ट्रांग जोन जो है वो लेग साइड है, तो कहीं ना कहीं ये एक जानकारी से आपको बात कर रहा है। ये देखिए कितना सच है। अब स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींच कर मारने के प्रयास कर रहे थे लेग साइड की दिशा में,
तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग जोन को फर्क लिया है हाँ गेंदबाज रमेश ने। और ये देखिए एक और बार बिल्कुल पैरों पे जाकर टकराई है। इस बार लेग बाय, लेग बाय जी नहीं, बल्ले से लेग बाय, लेग बाइज का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा। तो चलिए ये लेग बाइज के साथ साथ ओवर की भी समाप्ति हम देख रहे हैं। 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 41। 41 पर 3 विकेट है नजीर सुपर वॉरियर्स। और अंतिम और आखिरी 6 गेंदे अब आना बाकी है इनिंग्स की। और आखिरी 6 गेंदे लेकर कौन आएंगे, ये दिलचस्पी जरूर बनी रहेगी आगे चलकर। तो वर्तमान में तो अच्छे खासे नजर आ रहे हैं इशाक मकानदार। 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, 4 गेंद का सामना किया है। दूसरी और 6 रन पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज विनोद, वो भी नाबाद है, वो भी आपको मैदान पर नजर आएंगे। तो यहाँ ना थोड़ी सी आक्रामकता लेकर आनी होगी अपने खेल में, क्योंकि यहाँ मात्र 5-6 गेंदे शेष है और आक्रामक रवैया अपनाना ही है हाँ दोनों बल्लेबाज को। नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं आगे चलकर, जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तब थोड़ी बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये देखिए बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेला था कऊ कॉर्नर बाउंड्री पर। और लो कऊ कॉर्नर के फील्डर ठस से मस नहीं हुए थे, जहां पर खड़े थे वहां खड़े होकर इस कैच को लपकने में कामयाब हुए हैं। और लीजिए एक और विकेट का पतन होता हुआ नजीर सुपर वॉरियर्स टीम का। तो टोटल है 41, 41 पर 4 विकेट है, 41 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಲವತ್ತೊಂದು 4 ओवर 4.1 ओवर के खेल में टोटल 41 रन बने हैं और 5 गेंदे आना बाकी इनिंग्स की। अक्षय की ओवर की दूसरी गेंद थी, दूसरी गेंद दिशाहीन साबित होती हुई वाइड का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा। ये एक अतिरिक्त रन के साथ टोटल स्कोर 42, 42, 42 रन 4 विकेट। ओ हो बाहुबली की पल्ले से आग उगलता हुआ बाहुबली मर रहा है। रमेश लमाणी यहाँ शॉट मार रहे हैं भाई 143। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, आई लव यू भाई। ये लव करते हैं भाई, क्रिकेट के प्रति प्यार देखिए, ये लगाव देखिए, क्रिकेट के प्रति लगाव और खेल के प्रति निष्ठा साफ नजर आता हुआ रमेश लमाणी के बल्ले में बल्लेबाजी में। पहली गेंद सामना कर रहे थे और पहली गेंद को सीधे होम क्वारंटाइन में भेजा है। तो ये ऑप्शन से बहुत बाहर है गेंद, अंपायर एक और बार इशारा करते हुए वाइड का। अब टोटल 49 है और 1 रन अगर बनाने में कामयाब हुए अर्धशतक की मार तक पहुंच जाएगी टीम। थोड़ी सी व्यवधान खेल में, क्योंकि एक नई गेंद घुसी है अंदर मैदान के अंदर, घुसपैठ की है। अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है। तो बहुत बेहतरीन गेंद डाली है और विकेट, अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई। और ये गेंदबाज के हाव भाव से हमें पता चल रहा है कि अंदरूनी किनारा लगा था करके, क्योंकि इस गेंदबाज ने अपील में कोई कमी नहीं छोड़ी, जोरदार अपील देखने को मिला था और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई। इसी बीच एक और विकेट का पतन हो रहा है नजीर सुपर वॉरियर्स टीम का और 5 खिलाड़ी आउट होते हुए। आधे के आधे बल्लेबाज जो है वो डकआउट में आपको नजर आएंगे। अब 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अमित नायक को भेजा है टीम के कप्तान ने। तो देखना होगा क्या कप्तान की उम्मीदें पे खरा उतरेंगे या फिर अपना नेशनल गेम खेलने वाले हैं बल्लेबाज अमित नायक।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉडी का वेट जो देखा था। देखिए बैकफुट पर जाकर ये जो टाइमिंग इन्होंने बिठवाया है ना, दाग देनी होगी भाई, तारीफ करनी होगी इस तरीके की शॉट की। मच बेटर शॉट, मोर इन कंट्रोल। कंट्रोल में देखिए कितने कंट्रोल था, बैकफुट पर बॉडी का वेट थोड़ा सा ट्रांसफर किया था और गेंद आने तक इंतजार किया, उस गेंद को प्लेस करते हुए मिड विकेट इलाके में 2 रन लेने में कामयाब हुए हैं। बल्लेबाज अभी इतना है कि एक और बार जोर से मारने के प्रयास, इस बार ठीक से टाइमिंग बिटा नहीं है, बल्ले पे ठीक से आई नहीं थी गेंद, फिर भी वो गेंद को तकरीबन बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचाने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज। और ये मात्र रन बनता हुआ, ये 1 रन के साथ साथ रन गति को थोड़ी बहुत तेज रफ्तार पकड़ने में प्रयास करते हुए बल्लेबाज, तो ये टोटल स्कोर जो है इस वक्त 52 है। 5 विकेट खो रही है टीम। तो ये इनिंग्स की आखिरी गेंद अक्षय की, स्ट्राइक पर इशाक, इशाक का बल्ला, माशाअल्लाह, नया 6। 6 के साथ पारी का अंदाज, पारी को समान अंजाम देते हुए काफी बढ़िया अंजाम दिया है इसे का इनिंग्स को। तो लीजिए एक 6 के साथ टोटल स्कोर है 58, एक विशाल सा टोटल स्कोर है सामने। जब एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी तब थोड़ी बहुत दिक्कत तो जरूर खड़ी है उसके सामने, क्योंकि 10 रन 12 रन के औसत से रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट ये बहुत ज्यादा है भाई आजकल लिमिटेड फॉर्मेट में, और खासतौर पे जब आप कंक्रीट पिच के ऊपर इतना ज्यादा लक्ष्य पीछा कर रहे हो तब आपको ना मुसीबतें आना ही है हर हाल में। तो देखेंगे आगे चलकर कि एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम क्या फाइनल में प्रवेश कर पाएगी, या फिर नजीर सुपर वॉरियर्स टीम को मिलेगा फाइनल की टिकट, ये आगे चल के पता करेंगे। और इसी बीच अब अगली आवाज जो है वो हमारे आदरणीय हरीश सर, जो कि इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, इंग्लिश कमेंटेटर, अंग्रेजी भाषा में आप कमेंट्री सुन सकते हैं, उनकी जुबान से मीठी आवाज आपको सुनाई देगी। तो हम स्वागत करते हैं हरीश सर का कमेंट्री बॉक्स में, चलिए सर स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। साहिल ठाकुर, पुट्टी बुला रहा है आपको।
So welcome Arish Kadar as well, the owner of AK Royal Challengers Villa. It's a crucial game, qualifier 2. So pretty imposing total. In a 5 overs game, we have not, I'm talking about imposing total on this particular ground, considering the ground conditions. We have seen 70, 80 also quite possible at other places. There are some restrictions here on this ground that makes this total a very good one here from the batters of Nazir Super Warriors. Started really well in the best possible aggressive fashion from the skipper Sunil Lamani, who just swung across, got a couple of sixes, 3 sixes in fact of the first over, and they kept on with the momentum. Although you can't get 18 runs of every over, but when you look at the finish of 58, I think they have done a great job of the batter and bowled it on his legs, flicked around on the leg side, gets himself off the mark. 2 runs to the board so far. It was Sunil versus Anil, but Sunil comes out victorious with flying colors. But the match is not over yet. More sort of excitement there in the appeal. No conviction. There was no conviction in that appeal. Sunil also knew it. There was no age. It's more sort of you beat the batter, all ends up. You beat him with pace. You beat him with length. The ball goes straight in the hands of the keeper. Excellent comeback here from Sunil. Shot. What a bouncer. Let's see what is the call from the umpire. So let's see. It's wide called here by the umpire from the leg umpire to the main. Very much upset here, Sunil Lamani. Sometimes you feel that I bowled a good ball, but umpire was in the square side. He thought that maybe the ball has gone over the head height. But you got to really bowl the next one with full focus and concentration. Well, it's not about this Sancoale Big Bash. We have seen in international levels as well, but replays are very difficult to get. So please continue. Good response. Straight to the man. Slight fumble. Send the batter back. Akshay Bin coming in. But a good comeback from Sunil. A great dramatic first over. We saw a six. We saw a great comeback. And suddenly Sunil Lamani coming out with flying colors. So good first over here. 9 for the loss of 1. Starts off and the batter immediately gone intention of going for the switch hit, but he fired it down. Not a bad idea here when someone is going for the switch hit. He wanted to fire it on the offside. Full toss ball, man down there. Oh, that's unlucky. He kept on charging towards the ball. Extra bounce, taken over the top and gets the boundary. Lucky this time. Not the best of the connection, but finally the batters are going to take it. AK Royal Challengers Villa, doesn't matter. Runs should come, whether it's of the misfield, whether it's of the streaky age.
He goes over the top. Has he got the distance? We have to wait for the umpire's call. So 1 run signal has been given by the umpire. Let's see what Sarfaraz Nawaz has to say. So we are looking at the decision that is going to come. So discussion is going on. Okay, so it's 1 run that will be added. So with this 1 run, the score moves on to 15. It's a good total. They've got a good start in this over. They've got 6 runs of the first 2 balls. In the air, and the bowler takes it back off line delivery. He wanted to smack it over the long on region, just climb on top of him, beaten by the length and beaten by the pace, and has to go back. You can see a small stoppage in play always breaks the momentum, and that is what has happened here. If we had continued with the game, they were really going well. They were batting well, both the batters. It looked really good for them. Suddenly, that momentum, that time taken on the field, they have lost a wicket immediately. There's another play and a miss. Good comeback here that missed the stumps by just a small distance.
but really good one from Vinod. Bowling from round the wicket, angling the ball away from the right hander, played it towards the backward point. She'll get just a single. So the first three balls costed for 6 runs. Then he comes back and picks up a wicket. And a good comeback in the second half. 16 for 2 in chase of 59 runs. Anil Lamani. In the air. Bowler saying it is mine. And nobody has taken it. It falls right in between both the fielder, the bowler, and the mid-off. It was always a catch of the mid-off region. It was coming forward. The bowler has to go back, and you are not always comfortable while going back. So you should have left it to the fielder at the mid-off region. And it's a big, big prize they have to pay. Big drop chance in the qualifier too. And the marks that with a single, 2 overs done, 17 for 2. Oh, lovely, lovely. Going deep into the crease and got the elevation, got the distance. Absolutely top class stuff. Dilip Lamani has done incredible job with the bowling. It's just foxed Sunil Lamani with a beautiful deception ball. That was a Yorker and he bowled it, fired it in. Now he's a good batter. I've seen him in the past striking some big ones. He went with a plenty amount in the auctions. Certainly playing well. Just missed it. Sometimes I think how much is the percentage of success rate as far as the switch hit and the reverse is concerned. And at a time when you already hit a big shot over the leg side and is going for the switch hit, and there are not many runs towards the third man region. That's much better. That's much better cricket. This time he swung away on the leg side. And a great strike for 6 runs over the square leg region. Full toss ball taken to Toll. 29 for 2. Dilip Lamani is marching on and marching really quickly. 19 of 7 balls so far at a strike rate of 270 plus, laced with 2 sixes and 1 boundary. And this time it's a wide call. Another single. Moves the score to 30. So very tight game. Qualifier 2. A chance of going into the finals. It's still even Stevens. Slicing. Get the single. Moves the score to 31. It's a mix over. He has been hit for a couple of sixes from the bat of Dilip Lamani. He bowls a wide ball. Certainly this over costing 14 runs has gone in favor of the AK Royal Challengers Billa. And I think Dilip Lamani is the key. He holds the strength to finish this game. If someone is capable, then it's Dilip Lamani. He's got experience. He has got lots of runs behind him. Wonderful bowling right in the block hole, much better. No chance of swinging the bat. Trying to
if you're trying to open up, you are trying to cut loose, this is the ball that keeps you at bay, stops the runs. Driven down the ground, Dilip looking for a slight fumble. Run out on the cards, and yeah, that's a good job done, but I think it's a good, strong running between the wicket. Decisive running here coming from Dilip Lamani as he finishes the second run and will keep the strike. Sensible batting. 3 overs gone. AK Royal challenges Billa 33 for 2 after 3 and just need another 26 runs of the last 33 for 2. 33 26 26 चाहिए जीतने के लिए बाकी के बचे 12 गेंदों में तो बाकी के बचे 12 गेंदों में 26 रन चाहिए at 13 runs per over. It's quite possible with Dilip Lamani. They've got 8 wickets in hand, but especially I think the man who just can get them across the line is Dilip Lamani. Is playing beautifully at a strike rate of 250 with 2 sixes and a boundary. Has got great strike rate and a great swing. Comes with a repetition as a finisher as well. AK Royal challenges Billa. And they wanted him in the side anyhow. And just because he comes with his great striking ability and a calm, composed nature, he knows that now the last 2 bowlers are not going to be the strongest of Nazir Super Warriors. That is where you need to be calculative as a top order batter at number 1, number 2, or number 3 or 4 you are talking about. You should really be calculative and you should see who are the other bowling options. Can I target them? Or will it be fruitful for me, successful for me? Certainly, I think waiting for your chances is also a part of cricket. And I think he has waited for his chances here. $33 for 2. And smacks it. I think he has got enough bat to clear the mid-wicket boundary. What a great position to get yourself. It was almost around 4 meters length away from the bat, and this is a sensational pickup shot on the leg side. And always a 6 of the first ball puts the bowler under pressure, and he has done it immediately against Ishaq Makandar. Ishaq was the one having a great finish for his team, striking 6 of the last ball. Oh, that's gone over the top. Dilip says, I don't want single. And that's not a wrong call as well. Someone like Dilip, when he strikes big one over the onside, and he is feeling, it's all about feeling that I can hit one more here, and that will get the asking run rate and the pressure much lesser on my next batters. If at all we lose a wicket, but we have to see that we keep in the range, the runs and the difference between the runs required and the balls in the range. And that's why he's going for the big ones. 39 for 2. And he knocks him over. Can you believe it was a skidder? He advances down the track. The bowler sees the intent. He got an intimation. He dragged the length back and he skidded on quickly. And another look at the stumps that are being rattled here. All the 3 stumps have been uprooted. And Dilip Lamani has to take a dejected long walk back into the dugout. And whenever we say you should also never miss out of opportunity of a single. He wanted to go for the big ones, but if he had taken a single, he could have been at a non-strike. That could have been something else. That could have been different story. But here now the story is he's walking back, and that's the reality. That's the truth. 39 for 3. What a game of cricket. It's very tight. 20 needed of 9. Prince movies, such crystal and serene coverage. Here at Sancoale Big Bash.
Nicely picked up. Might get a boundary. Great timing. There's no one down at the long on region. The fielder at the mid wicket region, not the best of the thing here to keep a gap over the long on region. Mistake from the fielder side. Mistake from Sunil Laman. He should have tracked. The bowler is bowling a fuller length, so you expect him to play down the ground. He timed it really well and placed it well to get himself a boundary. 43 for 3 as 16 runs required in the remaining 8 balls. Just a couple of good strikes required for AK Royal Challengers Birla. They are taking on the challenge of Nazir Super Warriors. Over the top, chance of taking a catch. And taken very nicely by Gadda. It's fielding down at the long off region. No mistake this time around as another batter walks off. It's 43 for 4. Well, this is swinging like a pendulum here. Swinging like a pendulum just on one side at one ball after getting a boundary. And a wicket of the next ball is swings the other side. And yeah, that's how we want to see the game of cricket. From almost 26 runs required of 12 balls. Now we have come at a situation when 16 needed of the last 7 balls with 6 wickets in hand for AK Royal Challengers Birla. Wazir Knight Riders and their supporters watching it very closely. Whom are they going to face in the finals? Who is our opposition going to be? They have already beaten Nazir Super Warriors in qualifier 1. They have beaten AK Royal Challengers Birla in the bowl out. They have beaten both their teams. They will take anyone. But certainly, there will be some favorites in the heart that we are much better off beating this side. And if you talk about Nazir Super Warriors, is 16 required of 7. 1 dot ball will keep it 16. And the 16 runs, I think, is going to be a decent one to defend in the last over. And that's why AK Royal Challengers Birla will be searching for a boundary. Anything somewhere around 12 runs is quite gettable. Somewhere around 16 makes it a little difficult. And here comes the bowler charging in Ishaq Makandar. Good comeback so far, picking up 2 wickets in spite of going for a 6 of the very first ball. Ishaq charges in. In the air, might get 6 runs. He gets 6 runs. Can you believe it? He bowled in his arc. He bowled in his range. And the batter hits out of the park. This is a sensational hit. Well, the bowler is rejected. He knows I bowled one in the slot of a powerful striker. And he strikes it cleanly. What a strike this one. Putting all the pressure out. I was talking about a boundary. They got better than me. 49 for 4 as 10 runs required in the last 6 balls. 10 रन चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदों में. क्या काटे का मुकाबला है. काटे की टक्कर. जबरदस्त मुकाबला, जिस मुकाबले की हमको दरकार थी. ये पिछले गेंद में जो 6 रन यहाँ पे जड़े हैं, वहां पे अब आप जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो जरूर कहेंगे कि 60-40 जो AK रॉयल चैलेंजर्स बिरला के पक्ष में, क्योंकि अगर वो 6 रन नहीं जाते तो आप कहेंगे कि नजीर सुपर वॉरियर्स थोड़ा सा हावी रहता, क्योंकि 16 रन चाहिए थे. तो ये गेंद ने यहाँ पे पूरा काम कर दिया है. तो अब देखेंगे आखिरी ओवर यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा. अगर यहाँ पे 10 रन रोकने में कामयाब रहेंगे गेंदबाज, तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब के लिए दावेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज तो बल्ला घुमाएगा, और अगर बल्लेबाज बल्ला घुमाता है और भारी किनारा अंदरूनी किनारा लगता है, विकेट्स लपकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए मुझे लगता है सभी की आंखें जो है वो यहाँ पे मैदान में जड़ी हुई है, क्योंकि ये आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला. 10 रन रिक्वायर्ड ऑफ 6 बॉल्स. और यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं उमेश राठौड़. It starts off with the back of length. Look at the intent. Look at the effort. Run out on the cards. Throw at the non-end, and still the throw at the wrong end, but finally run out at the non-striker's end. Why it was required? The batter had already struck a 6 of the last ball.
and just sacrifices to his wicket for Mushtaq Hungary. Raju is the one who is heading back. Was it needed at this point of time? I thought it was needless. It was a good shot. There was never a 2 runs in it. And they should have always gone for the single. Why when the batter has already struck a 6? So 50 for 5, 9 runs required of 5 balls. Umesh starts really well. Once again, driving down the ground. There is a fielder. He won't go. See, the Harakiri is just trying to fox the batters. Faking, trying to act as if he's faking it over there. But faking is not allowed nowadays. So 2 balls, 2 singles. 8 runs needed of the 4. Great beginning here from Umesh Rathod. In the air. Fielder coming there and he takes it. What a good catch. Back of leg delivery, trying to go for a short arm jab, pull shot over the cow corner region, and it's been taken. Very nice catch, under pressure catch, and a crucial catch. They lost another wicket in the form of Mushtaq as he heads back, and it's the 5th wicket going down, and it is still Ramesh Ramya gone back, and it's still 8 runs needed of the last 3 balls. Eight runs needed of the 3 balls. I'd already mentioned he can be a hero in this game. He can be a player of the match contender. Walks in Akash Lamani to face Umesh Rathod. And he tried to surprise him with the bouncer, and he's been little lucky there, but they are not going for the second. It's Mushtaq Angeri wants the strike. We have got one of the most electrifying matches to be seen. If the match ends in a tie, it will be a super over. Kindly note, 9 runs needed of the, in fact, 7 runs needed of the 2 balls, 7 needed of 2. From Asif Bhai, a cash prize of 1,000 rupees if he hits a 6. 1,000 rupees cash prize if the batter hits a 6. 7 needed of 2 balls. What a match! And he plays it down the ground. Could not get the elevation. Would look to get the strike. He might be run out. Where is run out? He has missed it. And there's 2 runs. Can you believe? The bowler thought that he has hit it directly. The bowler thought he has hit it directly. The umpires clearly saw maybe it was the hand of the bowler that has touched the bails. And he was in the best of the position, Arjun Kattimani. And his 5 runs needed of the last 1 ball. Let's see, both the umpires are discussing here at this moment. This is going to be a crucial decision. Finally, it's all about reaching into the finals. Revan and Arjun trying to just discuss among themselves all the possibilities and taking the right call here. Qualifier 2 under progress. Nazir Super Warriors versus AK Royal Challengers Birla. Support for both the teams in large numbers. So umpires wants to confirm. Umpire wants to confirm because it's a crucial game.
And it is umpire's call. Umpire can take a call anytime if there is a doubt in his mind whether the bowler has touched with his hands or it was a direct throw that has directly hit the wickets. So these are the things that umpire calculates. So we are having a close look at the referral replay here. Let's see what comes up. It's very clear at this moment as the throw comes in from the long on region. So umpire has certainly clearly seen what has happened, and it is very clear and very evident. So he is going to take his call when he is going to take his position. Very, very, very clear from Prince Movies, and that is why you want to have the the best of the cameras, the best of the technicians, and the best umpire is going to take a decision. Umpire आ रहे हैं वहां पे decision लेंगे. And it's not out. Definitely the ball was not in the hands. The bowler knows it clearly that the ball was not in possession. 5 runs required of 1. 5 runs needed. And if it's the boundary, it's going to be a super over. 5 runs required of 1 ball. What a big match at Sancoale Big Bash here at Sancoale. Mega cash prizes up for grabs. A chance of going into the finals. It's the difference between 50,000 you're taking or at least 1 lakh. A chance of going towards that 1 lakh. If it's a 6 from Nandesh Naik, it's a 500 cash prize. Here comes the last ball. And it strikes. And we have to wait for the umpire's call. What a strike this one. Wow, what a match. And it's AK Royal Challengers Birla absolutely stormed into the finals. It was one of the most amazing matches we have witnessed ever. He swung it really well, swung it really hard, and it is the best swing that AK Royal Challengers Birla will have seen in that lifetime. He wins a cash prize of 500 from Nandesh Naik finally. And a lot of cash prizes will come his way as it is Sancoale Big Bash, and it is the big way that you enter in one of the biggest tournaments. What a cracking and what an entertaining game that we have witnessed here at Sancoale Big Bash. My heart is going to Wazir Knight Riders. They really played well. They really played wonderful cricket throughout, winning 4 out of 4 in the league games. But today certainly is not their day. They lost both the games in the qualifier 1 and now into the eliminator. And it's both the teams from Group B that have gone into the finals. It's Wazir Knight Riders versus AK Royal Challengers Birla in the finals, coming up after a short break. Until I see you again.